Hello students. In this video lecture, we continue with the previous lectures. And in the previous lecture, we were studying about logical, proportional logic. Okay. And in the proportional logic, we studied some conjunction or disjunction or negation. So, in the continuation, we are going to deal with another example based on the conjunction, dejection, disjunction, or negation. Okay, so I'm writing a question here. Let P, that is preposition, it will rain tomorrow. Okay, it will rain tomorrow. Okay, and another conjunction, another preposition Q will be I shall go to market. I shall go to market. So what we need to do, write down meaning of the followings. Question is that write down meaning of the followings. Number one, negation of P and negation of Q. Okay. And the second one, negation of Q and P. And the third one, negation of P or Q. So what does it mean? Now we come to the solution. Number one, if you talk about negation of P and negation of Q, what does it mean actually? It means that it will not rain tomorrow because it is a negation of P and P is both. It will rain tomorrow. It means that it will not rain tomorrow. It will not rain tomorrow. And we have the conjunction here. Then we put and I shall go to the market. I shall not go to the market because it's the negation of Q. I shall not go to the market. Okay. And now about the second one, negation of Q and P. It means what? It means what? It will rain tomorrow. Okay. If we talk about P, so it will rain tomorrow. It's simple. And I shall not go to the market. Go to the market. So it's quite simple, guys. It's very simple. Okay. Now, third one is that negation of P or Q. So negation of P means it will not rain tomorrow, or it's actually disjunction, or I shall go to the market. So it's quite simple.
Now, another example. Consider the following statements. Consider the following statements. Number one, P. It is running today. Sorry, it is raining today. It is raining today. Okay. And Q. It is cloudy today. It is cloudy today. And third one, it's about R. Okay, it's about R. That is, it is windy today. It is windy. How it is windy today. So, what is the question? Write following statements in symbolic form. Write following statements in symbolic form. Number one, it is either raining or cloudy today. It is either raining or cloudy today. And the second one, neither it is raining nor cloudy today. Neither it is raining nor cloudy today. And the third one is, it is false that it is raining today. It is false that it is raining today. But not windy. But not windy. Okay. And the fifth and the fourth one, it is cloudy or windy today, but not raining. It is cloudy. It is cloudy or windy today. It is cloudy or windy today, but not raining. Now the fifth one, it is false that it is false that it is raining or cloudy, but not windy. Okay, last one. Last one.
It is windy. It is windy, or else it is both raining and cloudy. So, guys, these are the statement. We need to convert them into the symbolic representation. So, if we talk about the first one, and first one is that uh, it is either raining or cloudy. So, it is either raining. Okay, it is raining means it's about I think P. Okay, it's P, or either or. Okay, here is the or. So we use the distinction, or it's cloudy today. So P or Q. Fine. It's a symbolic representation of this statement. What about the second one? Second one is that neither it is raining. It means both. Negation of P, and no, cloudy today. So not cloudy today. So here is the conjunction. Okay. So neither raining, that is P, and okay, nor cloudy, that is negation of R. Negation of R. So it's the symbolic representation of this statement. Now, if we talk about the third one, it is false that. So क्या false है? तो पहले हमें इसको कंप्लीट करना है. It is raining today but not windy. So it's raining today. That is, it's about P, uh, but not windy. That is negation of R. Okay, negation of R. So P, negation of R. And what about it is false? So negation of it. है ना? Negation of it. So it's quite simple. It is cloudy or windy today, but not raining. So it is cloudy. That is Q, or windy. So disjunction R. ओके. सो पहले आप क्या करेंगे? क्यू डिसजंक्शन. अच्छा, इसमें क्या है फिर से देखो बार. इट इसके और है. ओके ओके, डिसजंक्शन क्यू, ये है ना. बट नॉट रैनिंग. बट नॉट रैनिंग एंड कंजक्शन लगेगा इसमें. नॉट रैनिंग का मतलब निगेशन ऑफ पी. ओके. व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? इट इज फॉल्स दैट it is raining. First of all, we will deal with it is raining, that is P, or or cloudy, that is Q. Okay, but not windy, that is and negation of R. Okay, or क्या है? It is false. It is false, that is negation of it. It's very simple. So it's raining, it's windy, that is R, that is it's windy, that is R, or disjunction, it is both raining and cloudy. It is both raining and cloudy. So, so guys, these are the symbolic representation of these statements, and you can do now very easily all these problems, all the pillar problems related to these. Okay. Now we will move to the fourth one. Okay, connectives. Fourth one, connectives. That is implication, or we can say conditional connectives. Implication or conditional. So the propositions of the proposition of the type the proposition of the type
if P then Q, if P then Q is called conditional proposition. Okay, it's called conditional proposition. It is true, it is true if both P and Q, P and Q are true, P and Q are true, or if P is true, if P is true, so you can say if P and Q are true, or if P is false, है ना? If P is true, it is true that if P and Q are true, or if P is false, है ना? Or P is false. So it is false if P is true and Q is false. If P is true, it is false. Okay, it is false. It is false if P is true and Q is false. And Q is false. So it is denoted by, it is denoted by P right arrow Q. So guys, implication of conditional connectives, how we will define the proposition of the type if P then Q is called conditional proposition. It is true if both P and Q are true or P is false. Okay, or P is false, और या तो P false होना चाहिए या फिर P and Q both should be true. Okay, then it will be true. Okay, and it will be false if P is true and Q is false. Okay, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं. It is true if both P and Q are true, or if P is false. या P false हो तब भी ये true होता है ना? If P is false, then it is also true. And if P or Q both are true, then it is also true. Okay, then it is also true. So it is false. ये false कब होगा? If P is true and Q is false. In this case, it will be false. Okay. Otherwise, it will be true. ठीक? Now we will move to the truth table for it. Okay, P is called hypothesis or premises, and Q is called conclusion or consequent. It is also stated as Q is necessary for P. Q is necessary for P, or P is sufficient Q. We can say in this case, okay. Q will be possible if P is possible. So Q is necessary for P, and P is sufficient for Q. So how we will define the truth table for it? P and Q. Then P implies Q. So we have the four different cases here: true, 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 false, and false, true, and false, false.
So guys, as we have discussed above, P implies Q will be true only if both are true. Okay. And P is true, Q is false, then it is false. We have discussed above. If P is false and Q is true, if P is false and Q is true, then P implies Q is true. If both are the false, then it is true. Okay, then it is true. सो कहने का मतलब ये कि अगर P ट्रू है आपके पास तो Q ट्रू होगा, है ना? अगर P है तो Q होगा, है ना? क्योंकि Q जो है नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, ठीक? और अगर P ट्रू है और Q नहीं है आपके पास, है ना? तो ये फॉल्स होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है Q, तो Q का ट्रू होना जरूरी है P के ट्रू होने के लिए। ओके, नोट, अगर P ही फॉल्स है आपका और Q ट्रू है तो इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, है ना? इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसे देखिए, फिर से हम चलते हैं कि Q इज नेसेसरी फॉर P, Q इज नेसेसरी फॉर P और P इज सफिशिएंट, P इज sufficient for Q. Okay, P is sufficient for Q. That is, if P is true, then Q is true. If P is true and Q is true, then it is true. Okay, and if P is true, Q is false, then it is false. It's not possible. Okay, क्योंकि Q जो है आपकी नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, तो Q का ट्रू होना जरूरी है। If P is false, so it's not possible that Q will be true. So if P is false and Q is true, okay, then it's true. If both are the false, then it is false. So it's the truth table for this. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक नोट है हमारे पास, या हम ये देखते हैं P implies Q is equivalent to negation of P और Q। तो इसी टेबल में आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, है ना? इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे आप निगेशन ऑफ P और Q की बात करते हैं, ठीक है? तो व्हाट अबाउट द निगेशन ऑफ P? पहले यहाँ पे निगेशन ऑफ P यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉलम नहीं बचा हमारे पास। निगेशन ऑफ P की बात करें तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ठीक है? और यहाँ पे डिसजंक्शन है, तो अगर एक भी निगेशन ऑफ P और Q में, है ना, अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। तो इस अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। ओके, देन टी, क्योंकि आप बात करें निगेशन ऑफ पी और क्यू की, तो एफ और टी में एक ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहाँ पर भी ये अब इन दोनों में दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, और ये दोनों दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर टी और ट्रू और फॉल्स, एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। So guys, both are the equivalent, so you can check it. Okay, now अब हम बात करते हैं बाई कंडीशनल, ना, बाई कंडीशनल। By condition, the propositions of the form, the proposition of the form P if and only if Q. Okay, P if and only if Q is called a biconditional propositions. Is called a biconditional proposition.
is called a biconditional proposition. And it is true, and it is true either both P and Q, either both P and Q are true, or true, or both P and Q are false, or both P and Q are false. भाई ये biconditional connectives, okay, biconditional collectives of two propositions will be true if both are true, and will be false if both are false. Okay, so it is true either both P and Q are true और P and Q are false. Okay, ये तो दोनों ही false होंगे, ये दोनों ही true होंगे, तो उस केस में true होगा. अगर एक भी false और एक भी true रहा दोनों में से, तो ये false हो जाएगा. Okay, and it is denoted by like this. Okay, so for example, अगर हम इसकी एक ट्रूथ टेबल बनाए P Q and P biconditional Q, so वही हमारे चार केस बनते हैं ट्रू 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 false false true and false false. Okay, and false false. तो अगर दोनों ट्रू है तो इट्स ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तो भी ये ट्रू है. ओके, अगर एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स है. तो ये आपकी इसकी ट्रूथ टेबल बनेगी. To construct the truth table for the following. Okay, now we are going to write a question here. Construct the truth table for the following. Number one, negation of P and Q if and only if. Okay, negation of P or negation of Q. Fine. So, second one, P implies Q, implies Q, or R implies Q or R, then P implies Q, then implies R. Okay, now we deal with the first one. तो सिंपली काम वही छोटा सा हमें करना है कि पहले P एंड Q लिखेंगे, उनके पॉसिबल केसेस क्या, ट्रू दोनों ट्रू हो सकते हैं, ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द P एंड Q. सो और निगेशन P और निगेशन Q भी हमें निकालना है. तो पहले निगेशन P निकाल लें. निगेशन ऑफ P हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. निगेशन ऑफ Q क्या हो गया हमारे पास? निगेशन ऑफ Q हमारे पास हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. ओके, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट P एंड Q. ओके, सो P एंड Q दोनों में से ये तब ट्रू होगा अगर दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. ठीक है, अगर आप बात करें P एंड Q की, तो जैसे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ये ट्रू हो जाएगा, देन फॉल्स एंड देन फॉल्स. ओके,
और इसके निगेशन की अगर बात करें, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू की अगर बात करें, तो इट विल बी फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। अब बात करते हैं आप निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू में ये निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, अगर इनमें एक भी आपका ट्रू है तो ये ट्रू होगा, दैट इज ये फॉल्स हो जाएगा पहले वाला, फिर ये ट्रू हो जाएगा, देन इट विल बी ट्रू, देन इट विल बी ट्रू। ओके, सो फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, है ना? बात करते हैं कि अब बाई कंडीशनल की। अब इन दोनों में से अगर दोनों फॉल्स हैं या दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो बाई कंडीशनल की आप बात कर रहे हैं। तो बाई कंडीशनल में हमारे पास क्या था, इफ यू रिमेंबर, बाई कंडीशनल में हमारे पास होता था कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा, ये पहले वाला है ना, वो लिख लेना आप खुद से कि क्या था आपके पास, निगेशन ऑफ पी और एंड क्यू बाई कंडीशनल, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, है ना, जो भी है। अब इन दोनों में से ये तो ट्रू हो गया, देन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, नाउ ये भी ट्रू, नाउ ये भी ट्रू, और नाउ ये भी ट्रू, वेरी गुड, तो सारे ट्रू हो गए, है ना। तो ये आपकी बनी इसकी ट्रूथ टेबल। तो सिमिलरली यू कैन डिजाइन द ट्रूथ टेबल फॉर द अनदर वन। Okay, and I hope you guys are very well uh, understood about these concepts. So in the next class, next video lecture, we will continue about these, you know, uh, logical equivalence and another truth tables for these. Okay, we will discuss some healthy questions, derived connections, and well-formed formulas. Okay, converse, inverse, and contrapositions. We will deal in the next class. Or algebra of positions. So if you have any query, any questions, then you can ask me freely, and you can comment me in the comment box also. Okay. So guys, keep growing, keep learning. See you in the next video lecture. Thank you very much.